Hi, this is Amina Sheikh here on Zoom channel and I'm back with my yet again new episode of Street Diaries. This time I have the Majnu who's turned out to be a Dara welcoming Avinash Tiwary on Street Diaries. Dhantanan! So here is Avinash Tiwary, literally surprise package के जैसे आ चुके हैं यहाँ पर and we are going to try something interesting today which is the street food of Mumbai. अंडा वाला भाग चुका है, the Burji guy. I can't see him. I think उसने off ले लिया है. बट देर इज स्पेशल मैगी जो आपके लिए बन रही है. सर मैगी बना रहे हैं आप? कौन सा वाला? अंडा डाल के नहीं बनेगा? अंडा डाल के नहीं बनेगा? नहीं वो. What kind of Maggi do you like? So Maggie is like a snack time, right? Most times I just put some eggs in it, so इतना carbs रहता है, साथ में थोड़ा protein भी चला जाए, so it becomes a more nutritious meal. So yeah, I just put some eggs and sort it. And what's your special memory of having Maggi? Maggie, my mama used to make Maggie and used to make it जैसे कि चिकन बना रहे हो. तो वो प्याज टमाटर और उसको काट के बहुत सारी सब्जियाँ and with the gravy it would really feel like कि अगर सिर्फ चिकन होता उसके अंदर तो ये चिकन ही लग रहा होता. So बहुत ही देसी स्टाइल में मैगी बनाता था. I used to really love it because I used to feel Maggie to be slightly bland to its normal जो हम खाते हैं 2 मिनट वाली मैगी. बट वो उसके साथ पूरी बड़ी मज़ेदार होती है. सो आई हैव ऑलवेज ईटन दैट. मैगी एक ऐसा फूड आइटम है इन इंडिया स्पेशली जब हम बहुत गरीब फील कर रहे होते हैं या सैलरी ख़त्म हो जाती है या कुछ शॉर्टेज हो जाता है. दैट टाइम ऑल्सो वी ट्राई एंड कुक. डू यू हैव एनी सच मेमोरीज? आई हैव मेमोरीज ऑफ माई हॉस्टल लाइफ वेयर आई वॉज इन कांदिवली. सो यू गेट अवे फ्रॉम योर शेल्टर्ड लाइफ विथ योर पेरेंट्स बट वो छोड़ के आप निकलते हैं बाहर. और रात को अगर मन करे और लेट नाइट चल रहे हैं तो वॉट देयर इज नथिंग एल्स टू डू बट मेकिंग मैगी. एंड मैगी वॉज ऑलवेज हर चीज़ में वो स्टार्टर बन सकता है. इट कैन बी एन एपेटाइजर फॉर यू, इट कैन बी अ मील फॉर यू, इट कैन बी सम पीपल कैन ऑल्सो मेक इट एज अ डिजर्ट. कुछ लोग सूखी मैगी खाकर भी काम चला लेते हैं. आई एम नो डिफरेंट. लोग बॉयल करके भी खाते हैं. देयर आर मैगी लड्डूज. ऑफ लेट आई हैव सीन मैगी. क्या मीठे होते हैं? हाँ वो मीठे होते हैं. वो गुड़ वाले मैगी लड्डूज होते हैं. डिजर्ट भी बन सकता है. So that's the great quality Maggie has. Moving on from Maggie to normal street food, आप street food कितना consume करते हो? मैं बहुत I love pav bhaji. Pav bhaji is my go-to if I'm having street food. I used to love vada pav a lot. बचपन में धीरे धीरे ना वो फिर मैं पाव हट गया और सिर्फ वड़ा इज़ व्हाट आई एंजॉय नाउ. सो आई टेक द पाव अवे. बहुत लोग गालियाँ देंगे मुझे इस बात के लिए बट आई नाउ just have the vada and especially the vada that I used to get दादर स्टेशन के पास. what's his name यार? नाम मुझे थोड़ा वो जो सिद्धि विनायक के पास जो है. नहीं सिद्धि विनायक वाला नहीं है. this is near the दादर station. Okay. And it's a very old one. I'm really bad with names. So I used to go for my engineering coaching classes and it was a fixed thing for me कि वो वहाँ से break होता था. I would come there और मैं 3 से 4 पाव खाता था. सॉरी वड़ा खाता था पाव के बिना. एंड दैट वाज माय लंच. दैट यूज्ड टू बी माय लंच. आई यूज्ड टू बी 97 kgs देन. सो यू नो व्हाई. पर आपने वेट लॉस कैसे किया देन? हाउ दिस एंटायर थिंग हैपेंड एंड अगेन यू हैड टू पुट ऑन फॉर दारा. So I mean this was back in 2004-5. I used to be 97 kgs then. And then I decided to be an actor. So सब लोग के दिमाग में पहली बात ये रहती है कि तुम कैसे बनोगे एक्टर. So once I lost weight, people started believing कि he has conviction, he has discipline and all those things. There were more support after that. So I realized it's not to do with your weight, but to see that you have the discipline and desire to do something. And so I lost 27 kgs then. I went to 70. And then now it's all about work. Yeah. Like for Bambai Meri Jaan, I don't know why, but I decided to put on weight and I had 40 inches waist. Within 10 days for Kala, I think I finished shooting for Bombay on 20th of Jan, 20 तारीख को. And 30th of Jan I started shooting for Kala. And I had to lose a lot of weight for that. So the only thing I did was go on fruits. That's been my way because even in Laila Majnu I lost about 12 kgs in 17 days. Because I had to be very very weak. In the end of it, like when you're So you've been doing this with your body a lot. Not advisable, not something that you should do. This is only for the parts. It's not healthy. But yeah, you go to some extent, you really stretch yourself every way possible just to be able to make sure that your audience likes you and loves you.
बात करें दारा की, सो दैट्स माई मदर्स फेवरेट कैरेक्टर एंड अगर मैं ये इंटरव्यू नहीं कर रही होती तो लिटरली मुझे फोर्स किया गया होता बिकॉज शी लव्ड इट एंड एट द सेम टाइम योर केमिस्ट्री, योर बाप एंड बेटा वाला इक्वेशन जो था बिटवीन यू एंड के मेनन वाज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट. आई लव द वे ही सेइंग शैतान and the way he's trying to make you recollect like what exactly have you become, a jovial kid to something very serious. बात नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है. आपका कैसा एक्सपीरियंस था? फर्स्ट ऑफ ऑल आंटी थैंक यू सो मच. आपका टेस्ट आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा बेहतर है. जहाँ रही बात बम्बई मेरी जान की, आई थिंक द कोर ऑफ द स्टोरी वाज द फादर एंड सन स्टोरी. एंड जब स्क्रिप्ट आई हमारे पास या जो भी उसके बारे में बात की हमने, दिस वाज द idea that we really wanted to take through this show. You were mentioning this scene and मुझे याद है कि end में खास करके जब the father and son have a scene together, he comes and asks him to come along because he needs him. Yeah. And eventually he again says कि जब मैं नमाज का टाइम होता है तो शैतान आता है. I was so intrigued. Sometimes I used to feel, is high morality or extreme morality can lead to escapism. Was a thought that would always, and I'm so glad we did the show, which is a conventional crime story for people, but it has so many more themes that are really being explored, and I'm really proud of Bambai Meri Jaan. I am. What makes me very happy about the role is, and also in fact more than happy, it's like I was just seeing Ranbir Kapoor's Animal teaser and I saw the equation between the father and the son and it was almost equally same as compared to the equation what we saw. And the way you are dressed, wo cigarette wala singing, the way there are people walking and the way people are around him, I saw similarity and I felt like काफ़ी inspired हो गए थे रणबीर कपूर आपकी एक्टिंग को देखकर. Yeah, thank you so much. Ranbir Kapoor is one of the best actors in the country and we all are inspired from him. I saw the teaser. I really, like, when I saw it, I was like, I wish I was doing this because he's done it so well. And if you find any similarity, I'm only grateful that you find it. But yeah, I think father-son stories have always entire cinema that you look at it. There is something so universal about stories like that it attracts everyone. And I think I'm really looking forward to, because of what I see, I think he's gonna kill it. Yeah. He's really gonna kill it. But didn't you also feel the same, somewhere there was similarity and we felt like that, the equation especially? I think like a couple of shots that you see, the father hitting the child, the father hitting him here, he turning out to become, seems like a monster, which I don't know if it's true. Yeah. And this man definitely, Dara Kadri definitely becomes a monster. So there is certain similarities, but I know the film would be taking off a different route because we were specific to Mumbai and the crime underworld of Mumbai. I'm sure the milieu and the space and the story where it happens is going to be different. But father-son stories are something that really, they have a universal connect with people, and I'm sure Animal will do the same. Coming back to Dara's रियल लाइफ, तो बहुत बात कर ली हमने. रियल लाइफ में दारा की कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपने खुद के लिए कभी अडेप्ट की हो? आई थिंक दारा, आई एम नॉट श्योर, दारा इज़ अ वेरी एस्पिरेशनल कैरेक्टर जो लोग उसे देखकर, the way he cares for his family all the time. Absolutely. I mean, caring for the family, this desire to be a provider and protector of the family. I'm sure every man, including you, sir, would be wanting to feel this, that you want to be a provider and protector of the family. I think also aspirations, finding yourself limitless, finding yourself capable of much more. I think those are the qualities that I have definitely picked on, because since I started doing it, I find my own personal aspirations have increased, and I hope it stays with me and I'm able to do, without doing what he did, able to do what I want to do. अविनाश, आपके चर्चे इतने फेमस हो चुके हैं बॉलीवुड में दैट करण जौहर हैज़ बीन लाइक लिटरली अपलॉडिंग यू, प्रेजिंग यू, पब्लिकली बोल रहे हैं. आपका क्या रिएक्शन था ये? He's very sweet. He's always been very sweet to me. And even when we did Ghost Stories, I think he had so much of love to give me and for my work. And I'm grateful. Karan, someone I mean, I can reach out to him whenever I want to, and
thankfully he's always been kind enough to respond back. So I feel it's great that I have someone like him who's ready to acknowledge the good that I have and maybe point out when I go off. बट फैमिली से क्या फीडबैक मिला था व्हेन इट केम टू दारा? वर दे लाइक अ बिट स्केप्टिकल कि पता नहीं हमारा बच्चा क्या कर रहा है? मतलब I think my family was slightly thrown off. They had seen Khaki and they really loved me in Khaki. There is certain profanity in our show, and I used to sit down and explain it to them कि देखिए मैंने खाकी की है ऐसी ऑडियंस के लिए, ये बम्बई मेरी जान है एक अलग ऑडियंस के लिए है, वो किरदार से प्रभावित एक शो था, प्लॉट ड्रिवन शो था, ये एक दुनिया अलग है और इस दुनिया में ऐसा होता है, ये दुनिया इज़ द हीरो ऑफ द शो. आई थिंक धीरे धीरे उनके समझ में ये बात आ रही है ना, बट दे आर रियली रियली हैप्पी विद द वर्क दैट आई हैव डन and really proud. I think I just got an award recently and I saw my father taking pictures of all the awards that I have and posting it out together. It's kind of a redemption for him because it took me a long time and आसपास के लोग जो होते हैं, जो सोसाइटी होती है आपकी, हमेशा पूछते हैं कि आपका बेटा करता क्या है, भाई इतने समय से एक्टिंग कर रहा है, दिख नहीं रहा, यू नो, ऑल दोज थिंग्स. एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर देम मोर देन इट वाज फॉर मी, वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज आई न्यू इट विल हैपन फॉर मी वन डे, बट फॉर देम टू कॉन्स्टेंटली आंसर दोज क्वेश्चंस. And today I think it feels like a redemption for them. I feel happy once I go home. अभी तो ये पूरा सितंबर महीना तो एक फेस्टिवल ही था मेरे लिए. I had 2 shows releasing, so a lot of love. It's nice. I feel very happy when I go back home. पर अभी आपको अच्छा लग रहा है जैसे रिकग्निशन मिल रहा है एंड पीपल आर रिकग्नाइजिंग यू फॉर योर वर्क? अभी आप खाना खाने में सोचते हो 10 बार? मतलब रिकग्निशन धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, ऑफ कोर्स, एज यू डू गुड वर्क. बट या बम्बई मेरी जान के लिए ये ज़रूर होगा कि रास्ते पर खड़े होते हैं तो 4 लोग आके हेलो हाय कर रहे हैं और दे वांट टू टेक पिक्चर्स विद यू. फील्स नाइस, ऑफ कोर्स. एज एन एक्टर यू फील लाइक योर वर्क इज़ बीइंग एक्नॉलेज्ड एंड वैलिडेटेड एंड इट हैज़ रीच्ड सो मेनी पीपल. थैंकफुली most of my work has been loved and acknowledged, but probably it never had the reach, and now I've started to get that too. So it's a great feeling. Of course, any actor would love it. चलिए देखते हैं आपका खाना बना के नहीं, बिकॉज और बुर्जी वाला भी आ चुका है यार, लिटरली. मेरे कोई शिवलरी नहीं थी, ये सिर्फ चेक करना था कि अगर अच्छा हो. हाँ. आप ऐसी मैगी प्रेफर करते हैं या थोड़ी और कड़क? आपका चॉइस क्या है? हाँ, मतलब मैं थोड़ा नहीं, आई थिंक इसी टाइप की होगी, बट इट विल बी मोर वेजीज. अच्छा. एंड लाइक आई सेड, मे बी चीज I like. I also sometimes put butter in it. My sister loves it with ketchup. So if she makes it, she will ensure that I also eat it with ketchup, which I don't like. But yeah, I do that. और पर आपको पता नहीं कि मैंने अविनाश के घर का खाना खा चुका है, थैंक्स टू हिज सिस्टर. शी वाज वर्किंग विद अस लॉन्ग बैक, सो या, और वो काफ़ी यम्मी है. तो आप वो डब्बा कभी बाहर लोगों के सामने ला रहे हो? मैं एक्चुअली खुद के लिए खाना बनाता था, बिकॉज माई मॉम वुड ऑलवेज मेक स्टफ विच इज़ ऑयली, एंड वो चाहती हैं अपने बेटे को एक तरीके से खाना खिलाना. सो एक पॉइंट पे मैंने कहा कि मैं ही अपना बनाऊंगा खाना. सो आई यूज्ड टू कुक माई ब्रेकफास्ट एंड आई यूज्ड टू कुक लंच, make it in 2 tiffins and have it for dinner as well. And तो मैं तो अपना खाना खुद ही अब बनाता हूँ, लेकिन मेरी माँ जो खाना बनाती है, मम्मी, I really love it. आज काफ़ी पैम्परिंग मिलने वाली है अविनाश को. नहीं, बट ये सच्चाई भी है, मुझे इतनी मिलती भी है, मैं भागता रहता हूँ कि मुझे इतनी पैम्परिंग नहीं मिलनी चाहिए. But the food that she makes, I can't resist, yeah. And I put on weight all the time. I have a tendency to put on weight, right? Yeah. So it does happen. तो मैं थोड़ा बचता रहता हूँ उससे. मैं बाद में ये डाइट चार्ट लेने वाली हूँ, because how I don't know where he's put on weight. I think I've lost more rather than putting on. अभी तो I mean I had abs and all to show you, but unfortunately अब नहीं है मेरे पास. But बहुत जल्द वापस 2-3 महीने में, शायद जब अगला हम इंटरव्यू करें तो मैं सड़क पे खड़े होके अपने एब्स देखा. बट आपकी डाइट में कितना चेंज आया है, स्पेशली योर फूड ईटिंग हैबिट्स में, आफ्टर बिकमिंग एन एक्टर एंड बिकमिंग अ पॉपुलर वन? See, I think I don't think I'm a lifestyle kind of a guy. I'm a goal-based guy. So मुझे अगर खाली समय है, काम नहीं है उस वक्त, तो मैं ज़िंदगी के सुख नहीं छोड़ना चाहता. Things that I love, I eat everything. And when I know I have to get disciplined, तो तब ये हो जाता है कि अब मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी है.
and they go off. That's something I'm blessed with. हाँ. कि once I decide कि ये नहीं, तो ये नहीं. Once it's back to having fun, everything is out. So I can eat everything, anything. I'm not very moody about food. I can eat most of the things, which is why my mom loves me more than my sister. ऑल्सो जब बात करें खाने की, एक होता है कि जब अलग अलग मूड्स होते हैं, स्पेशली जब तुम गुस्सा होते हो तो तुम कुछ खाते हो, जब तुम नाराज़ हो जाते हो तब कुछ खाते हो, जब तुम सैड हो जाते हो या खुशी में का खाना, आपके कौन से फूड आइटम्स हैं? So I love sweets and खासकर रबड़ी मुझे बहुत पसंद है. Normally बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, but that's one dessert I can't say no to. So if I have that, तब वो हर 15 मिनट बाद मैं चक्कर काट के आऊँगा and I will take 2 spoons. I'll eat. Then फिर आधे 1 घंटे बाद वापस आके, and that's how you gain weight, so you don't do that. But it's that kind of food for me. Normally अगर आप मुझसे पूछें comfort food, if I have fixed, जैसे if I go to we go on shoots and you are mostly staying in hotel rooms जहाँ दुनिया भर का सब कुछ होता है मेन्यू में. My go to is खिचड़ी अगर होगी तो खिचड़ी भेज देना. एंड कोई चिकन का कोई ड्राई आइटम जो आपके पसंद आए. दिस इज़ माई ऑर्डर एंड दिस व्हाट आई ईट नॉर्मली. सो खिचड़ी, चावल, दाल, कोई सब्जी हो, आई एम सॉर्टेड इन इट. आई एम वेरी वेरी हैप्पी ईटिंग दैट एवरी डे ऑफ माई लाइफ. कभी एक्स की शादी अटेंड की है या उसके गम में कभी ऐसा कुछ खाना खाया है आपने? मैंने एक्चुअली अपनी एक्स की शादी अटेंड की है. खाने के लिए? खाने के लिए नहीं. अच्छा. मुझे बुलाया भी गया था. So I had gone and it was quite early in my life, but yeah, अच्छा तो लगा. It was you feel slightly off about it, but खाना तो अच्छा था. खाना अच्छा था. So मैंने नाचते नाचते अपने जूते भी तोड़ दिए थे, मुझे ये भी याद है. कि अब खुशी मनाएंगे, अब तो हम अब विदा हो रही हो तुम. तो वो सारे फिल्मी डायलॉग्स किए हमने. अविनाश, आपको तीखा खाना पसंद है कि ब्लैंड और लाइक सिंपल? आई थिंक दैट हैज़ चेंज फॉर मी. आई यूज्ड टू लव स्पाइसी फूड अ लॉट. धीरे धीरे आई थिंक दैट हैज़ गॉन डाउन. मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं अच्छा लगता. बट आई स्टिल प्रीफर स्पाइसी ओवर कम्प्लीटली ब्लैंड फूड. मुझे ब्लैंड फूड नहीं पसंद है. वो काम के लिए अलग खा लो, अलग बात है, बट अदरवाइज. और जब आप ट्रैवल करते हो, से आउट ऑफ इंडिया, आप सबसे ज़्यादा क्या खाते हो और क्या मिस करते हो खाने के लिए? See, if I'm going to a country where like say if I was in London, right? So if I go there, then I'm gonna try everything that I don't get in India. I try a lot of different kind of meats. Like I'll tell you, Malta we had gone and I got a chance to eat rabbit. And because you don't get to eat rabbit in Bombay, in Mumbai. I had not eaten such soft meat in my life. I didn't know that rabbit is so soft, and so I tried different stuff. Especially if you go towards Europe or UK, try different kind of cheese that they have to offer. So things that you don't get here is what you would try there. But if you come back to staple, it is chawal dal, aloo ki sabzi, sorted in that. How careful are you doing any intimate scenes or romantic scenes on screen before having a meal, or like, you know, after having a meal? I don't think about it, very honestly. You're doing an intimate scene, the other person is also doing an intimate. It's like any other scene that I would be doing. And if you take care of your personal hygiene, then you shouldn't worry about it, very honestly. So no, I don't think much about it. It's like any other scene that you would do. Action भी होता तो उतना ही सोचता जितना intimate scene करने में कर रहा हूँ. The only thing that you can do is ensure that your co-actor is comfortable, and if they have any issues, you should not take it to your heart. It's not about you. It's about what gives them comfort, and sort it out. It's as simple as that. मुंबई में ऐसी कौन सी जगह है जिसका स्ट्रीट फूड आपको पसंद है, और आपका यानी कोई ऐसा अड्डा होगा मुंबई में? वी ऑल हैव दिस अड्डाज, लाइक से सरदार की पाव भाजी, से यू नो केम्स कॉर्नर पे जो मुच्छर पान वाला है, लाइक दैट, यू नो, आपका कौन सा है? So if you go to town, Xavier's के आगे से you see this whole street of विल्सन कॉलेज वाला जो Wilson College street food area. So early days that used to be our thing. If you're going town, we are going on that street and we are एक जगह यहाँ पे ये खाया, 3 दुकान छोड़ के फिर कुछ और खाया. And normally it used to be
वो कचौड़ीज नहीं होती हैं, हाँ दही कचौड़ी जो एक बड़ी वाली कचौड़ी में बनती हैं वो, या फिर बड़ा पाव तो स्टेपल, पाव भाजी इज़ माई गो टू, एंड देन दे हैव दाबेली Dabili because I was studying in DPY and filled with Gujaratis and Parsis. And Dabili was like everyone would bring Dabili for snacks. It was a given. और हमारे स्कूल के जस्ट थोड़ा आगे like 50 meters there was a guy who used to set up a Dabili corner. और भीड़ मतलब ऐसी लगती थी वहाँ पे. It was a go-to thing. शाम को क्या कर रहे? Dabili खा रहे. So I think that 1-2 साल मेरी ज़िंदगी का होगा जहाँ पे हर शाम दाबेली खाने या 5 गार्डन्स में गोला खाने, गोला शरबत, ये पता नहीं कहना चाहिए नहीं, DPY के सामने ही एक गर्ल्स स्कूल थी, क्या नाम है यार, अगेन बैड विथ नेम्स. सो वी यूज्ड टू ऑलवेज स्टैंड देयर क्योंकि इट वाज अ गर्ल्स स्कूल. हम अपने स्कूल की लड़कियां जो है दे यूज्ड टू ऑलवेज बी ऑफेंडेड बिकॉज वी यूज्ड टू बी स्टैंडिंग देयर, और उनके पास एक गोला वाला था. सो गोला वाला से गोला लेने का बहाना करते थे. और वाह क्या ये स्टाइल है. सब हमने ये सारी चीज़ें की हैं. और या नाउ वी हैव ग्रोन. ट्रिक्स पता चल चुकी है which anyone can try. You got the trick right now. नेवर बी क्रीपी गाइस, लाइक यू नो ऑलवेज बी मन में अगर साफ अच्छे भाव रहेंगे तो आप सामने वाले को भी वही. And that reminds me Avinash's look from Laila Majnu जो बहुत स्टाइल में आप चेक आउट कर रहे थे literally in that movie. Do you remember? Some people thought that was creepy too, so I don't know. Oh really? Yeah. ये पता नहीं लोगों को तो समझ ये आएगा. नया ट्विस्ट है literally Maggie with अंडा भुर्जी. शुक्रिया, थैंक यू. Deadly combo. है ना. चलो. ये मैगी में सिर्फ कार्ब्स होते हैं, न्यूट्रिशन होता नहीं है, तो थोड़ा न्यूट्रिशन डाल लेना चाहिए. टेस्ट भी होगा और हेल्थ भी. I really want to know the taste now. No, I mean you have it. You have it. I want you to tell me कैसा है taste. It's lovely. It's the burji is very nice भाई. बहुत अच्छा बना है. अगर मुझे अविनाश के हाथ का कुछ खाना हो तो वो क्या हो सकता है? देखिए मैं चाइनीज़ कुछ चीज़ें अच्छी बना लेता हूँ. 2-4 बार जो मैंने पास्ता वास्ता बनाया वो भी लोगों को पसंद आए. बट आई नॉर्मली वुड कुक देसी चिकन और रोटी चावल प्याज के साथ, थोड़ा अचार होगा, और एक कोई आलू की भुजिया. आपको पता है? हाँ. आलू की भुजिया. दिस इज़ माई फूड. इफ़ माई फ्रेंड्स कम ओवर एंड इफ़ आई हैव टू कुक, दिस इज़ व्हाट आई एम कुकिंग फॉर देम. जोश में खुशी में कभी कभी बनाना तो चाइनीज़. आई ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ स्टीम्ड फिश. तो वो सब स्टाइल मारने वाले खाने में बना लेता हूँ. बट स्टेपल वुड बी चावल, चिकन, आलू की सब्ज़ी, प्याज, अचार. और मैं अब चाहती हूँ कि आप ये खाने को एंजॉय करें. बट बिफोर आई लेट यू गो आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू. बॉलीवुड में किसका डब्बा आपको अच्छा लगा है अब तक? किसका डब्बा मुझे अच्छा लगा? मैंने बहुत लोगों के डब्बे खाए तो है नहीं. यार मैंने, अगर मैं याद करूँ कौन अपना खाना में, मुझे लगता नहीं कोई खाना शेयर करता है मेरे साथ यार. Really? Yeah. आप डब्बा चोर कभी बने हो? मेरे पास हमेशा 2 डब्बे होते थे. तो मैं हमेशा You were blessed, literally. आई वॉज ऑलवेज समवन हु वाज Serving the डब्बा. सर्विंग फूड. तो यार ऑनेस्टली मुझे अपना ही लगेगा फिर तो. मेरे ऑब्जर्वेशन में पर मेरी किसी का तो डब्बा खाया होगा, तृप्ति का, अमायरा का, कभी ऐसा सच. तृप्ति मेरे डब्बे से खाती थी. हाँ. एंड हमारा इज लाइक too devised to eat from my dabba. But she's been so nice. Amara had invited me home. She had cooked. हाँ. So I can say that she cooks well. अब उसने मुझे बोला था उसने बनाया, पता नहीं उसने बनाया या नहीं. But I think that was very nice. She cooks really well. So I can say Amara definitely cooks well. और कौन है? नहीं, और किसी ने अपना डब्बा तो शेयर नहीं किया. तृप्ति ने मेरे डब्बे से बहुत चुराया है. ओह, तृप्ति यू आर अ डब्बा चोर. और तृप्ति के लिए मैंने बहुत चाय बनाई है. आई जस्ट मेट हर यस्टरडे एंड टोल्ड हर कि फॉर लाइफ लॉन्ग ना अगर तुम मुझे चाय बना के पिलाओ तुम ये कर्ज नहीं उतार सकती. सो मैंने क्या है यानी अविनाश के हाथ की चाय बनती है बिकॉज वी ऑल आर चाय लवर्स. आई मस्ट से दैट. But before I let you go, what are your upcoming projects you're working on and what is keeping you busy? So one that I can definitely talk about right now is Madgaon Express. It's a theatrical as of now. It's going to be released by Excel. It's directed by Kunal Kemu. We have Pratik Gandhi, Dibendru, myself, and Nora Fateh. So yeah, we're all together on that film and hopefully people like it. So let me allow him enjoy this amazing food.
along with Maggie and Anda Bhurji. And ये deadly combo हम सब try करने वाले हैं after this interview. Lovely chatting with him and knowing a lot about him, his food habits, and having him on the Street Diary. Thank you so much. Such a pleasure. I am Avinash Tiwary and you're watching me on exclusively on Street Diaries on Zoom.